might. But here at Mysuru, they will be putting up a strong show is what they have decided as the umpires contingent walks in on the mat. And this is once again a fabulous setup here as Aravalli Arrows and Chola Veerans both are the very strong side. Losing to Nilgiri Knights 23-20. Aravalli Arrows now in front of us is Rajendra Bakar, the strong left corner. Ankit Jat on that right corner. Brijbal and also Tausif Ahmed and Navpreet Singh will share the raiding responsibilities, and Prem Bhadu, the captain, will be once again making sure the covers are very strong and straight with as Harshit will be joining us. We will have Dinesh Chand and Rohit Singh in the corners, and then we will have Ranjit, of course, along with Ankit, along with Ayyappan Veerapandiyan, making sure the raiding duties are shared, and Praveen Ayanar and of course the captain Gautam Murugan will be in the covers. Mohit Dul, Inian and Vignesh Babu will be in the substitution lines along with coach Jay Kumar. And as the toss process was gone underway, Sagar Panchal, he says Aravalli Arrows have won the toss and they have selected the course. So the first trade will happen, I think, from maybe Ayyappan Veerapandiyan. We will have to check that out. In the dark purple, as always, is the Aravalli Arrows, and then the Chola Veerans, of course, having their color with the orange mixed in their jersey as well. So very important match because Aravalli Arrows 23-20, they did not expect to lose against Nilgiri Knights, and that was one definitely for the defending skills of Nilgiri Knights and Rajesh Gurjar. He will probably change a lot of things today. But Jay Kumar, the other coach of Chola Veeran, will be really happy because last match was a runaway victory, 45-12 for the Kaziranga Rhinos there for Chola Veerans against the Kaziranga Rhinos. So Jay Kumar will be confident and he will be trying to emulate the same performance against the Aravalli Arrows as well. So let's see what's going to happen as we are all now set for the countdown of this match, and let's just give match. Right, so the Aravalli Arrows winning the toss. The first trade will happen from the left to right of our screens as Chola Veerans have sent in, as expected, maybe Ayyappan to start the proceedings off. Right Raider will be targeting a lot on that covers as well. You'll have to watch out, especially because Prem Bhadu is right there. But nevertheless, he will not be under that contention as Ankit Dhaya, right, he starts off the proceedings. Goes back with an empty raid, and Harshit, hi Harshit, welcome to the commentary box. जी थैंक यू सो मच नवीन, और बिल्कुल आपने सही कहा था कि आज पौंडीचेरी की तूफान की हम बात करते हैं, चोला वीरांस का तूफान यहाँ पर आ सकता है। और वैसे जो बीजोपाय और तूफान है वो राजस्थान में प्रवेश कर चुका है, और वही राजस्थान की टीम अरावली एरोज यहाँ पर खेलती हुई नजर आएगी। तो आज देखते हैं कि तूफान किसका यहाँ पर क्रम कर पाएगा। दोनों ही टीमों का डिफेंस बहुत अच्छा है। रणजीत यहाँ पर आपको रेड लगाते हुए नजर आएंगे, लेफ्ट रेडर हैं, अच्छा किया था इन्होंने पिछले मैच में, और देखिए बहुत ही साइलेंट परफॉर्मर है अपनी टीम के लिए। क्या यहाँ पर क्लेम किया है, कोई पॉइंट मिला है, ब्रजपाल को शिकार बनाया है नवीन पहली ही रेड में। And he also targeted one of the major raider, Brijpal Singh, running hand touch. Where was the hand touch, by the way? Left in, and even Rajendra Bakar was shocked, like me. I think it was the toe touch that came in, and Tausif Ahmed, because there is no Brijpal, he has to come in. As we heard what Rajesh Gurjar was mentioning in the pre-show, he was just making sure Tausif Ahmed will be there as the do-or-die raid expert, but for me, he's much more than that. He is not just a third raider. He can create a lot of confusion in the defense. Tausif Ahmed comes back empty-handed. Only 1 point on the raiding, and that has gone to the Chola Veerans as of now as Ankit Dhaya comes back. यहाँ पर अंकित दहिया वापस आएंगे अब रेड पर, और तौसीफ के बारे में और चर्चा की जाएगी नवीन। जैसे जैसे मुकाबला आगे की तरफ बढ़ेगा, हमने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इस खिलाड़ी को देखा है, पर यहाँ पर लीजिए अंकित जाट की हम बात करेंगे, फ्रंटल ब्लॉक किया, उसके बाद लग रहा था कि क्या अंकित दहिया जो है वो अपने पैरों से मिड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, बट अच्छा सपोर्ट आया साथी का, बहुत ही बुलडोज कर देने वाला डिफेंस। He covered the angle very correctly. The anti-dash was in place.
from Ankit Daya. But that right corner, Ankit Jat, he made sure the cover and the block was nice. Now Preet Singh, we've seen what he also can do for the Aravalli Arrows prior to this, and wanted to jump over. Does not happen. Rohit Singh right there in front of Navpreet Singh, pins him down. जी हाँ, शिकार बनाते हुए यहाँ पर नवप्रीत का सेकंड रेडर के तौर पर नवप्रीत का यूज किया जा रहा है। जंप लगाना चाहते थे राइट कॉर्नर के ऊपर से, रोहित सिंह ने पहले चेन को छोड़ा, उसके बाद राइट लेग को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया और एक बढ़िया प्रदर्शन। और यहाँ पर एक बहुत ही जाना माना चेहरा अय्यप्पन यहाँ पर रेड लगाने आएंगे। और मुझे अभी भी याद है पौंडीचेरी का वो मैदान था जहां पर अय्यप्पन जो थे हमारे साथ लगातार इन्होंने हमारी बहुत सेवा की थी, चाहे फूड सर्व करने से लेकर पूरा प्रॉपर ध्यान रखने तक, पानी से लेकर हर एक सुविधा इन्होंने पहुंचाई थी। और ये इनकी मोटिवेशनल स्टोरी है नवीन, कि इन्होंने लगातार प्रैक्टिस करते चले जा रहे थे उस समय भी, इस समय भी। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जहां बैठे बैठे सिर्फ अपनी टीम को मार्गदर्शित करते थे, तालियां बजाते थे, यहाँ पर उन्हें बतौर रेडर खेलने का मौका मिला है अय्यप्पन को। That's very good. He's earned that spot. I just want to know if it's Ayyappan Veerapandiyan or Veerapandiyan. I guess it's Veerapandiyan. Let's see. I think there's some small error, but let's go with Ayyappan as of now. But another empty raid for Aravalli Arrows as that brings in Ranjit Daivaranga. That's an error. Left corner. No, Rajendra Bakar. That is not what you want to see from such an experienced campaigner. 2 point. Chola Veeran. जी हाँ, यहाँ पर गलती हुई है। ब्रजपाल एक बार पुनः वापस बाहर जाएंगे। राजेंद्र बाकर ने फ्रंटल ब्लॉक करने का प्रयास किया था, वो एंगल कट नहीं कर पाए थे, वो मौका दे दिया था कि आसानी के साथ रेडर जो है बच पाए और उस मौके को पूरी तरह से बुनाया। और अब तौसिफ की बात कर रहे थे नवीन, तो तौसिफ हमने इन्हें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग सीजन देखा है। मुझे लगता है कि हमने पहले समर एडिशन में भी इन्हें कहीं ना कहीं देखा था, उसके बाद भी लगातार खेले। इनके पास ये दमखम है कि ऐसा प्रदर्शन ही कर पाए। अभी भी थर्ड रेडर के तौर पर अगर आप इन्हें खिलाएंगे तो आप इनके अनुभव का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। Yeah, he's shown it quite often. There, look at that. Diving hand touch on that left corner. So very good. As Dinesh Chand did not understand what Tausif Ahmed was trying to do. But now Ankit Daya, he comes back. And we know what one Daya can bring on. Kartik Daya. And now again creating confusion in the defense line. What is happening? Aravalli Arrows, they are falling apart and they don't have a plan. 2 point. Chola Veeran. जी हाँ, इस बार अंकित जाट कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। यहाँ पर देखिए पहले नवप्रीत और अंकित की बात हुई कि शायद हमें जाना है डिफेंस में, पर जब नवप्रीत गए अंकित वहां पर पीछे बैकफायर कर गए और इसी के चलते यहाँ पर फिर से परेशानी का सबब बन रहा है। बट चोला वीरन से एक बार फिर से बहुत अच्छी शुरुआत। तौसिफ अहमद क्या आप अपने कोच को बता पाएंगे और सभी को बता पाएंगे कि वो है टॉप रेडर की मात्रा रखते हैं, क्या उन्होंने अपने गेम को और इम्प्रोवाइज किया है और अच्छा किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो करना चाहिए था उन्हें। Yeah, you just mentioned a line from the movie Three Idiots, and there are three defenders on that court now for the super tackle in Aravalli Arrows, and that's a nice diving ankle hold. Wonderful work from Prem. Brilliant. Prem Bhadu, the captain. 2 point. Super tackle inflicted. That is the first tackle point for Aravalli Arrows. क्या बात है, बहुत अच्छा सुपर टैकल। यहाँ पर देखिए रंजीत थोड़ा ज्यादा अंदर आ गए थे और इनकी पोजीशन पर टच करना चाहते थे और लेफ्ट कॉर्नर से बहुत अच्छी डाइव लगाई। परफेक्ट फ्रेम को उन्होंने चूज किया, परफेक्ट टाइमिंग को उन्होंने चूज किया और उसके बाद तो अच्छा सपोर्ट आना ही था। तौसिफ अहमद 17 नंबर जर्सी, क्या खतरा बन पाएंगे? देखते हैं फिर से चोला वीरन का डिफेंस। राइट कॉर्नर पर ध्यान दीजिएगा, रोहित थोड़ा सा हाई लाइन वहां पर खेल रहे हैं, एम गौतम राइट कवर खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेफ्ट कवर पर आपको खिलाड़ी प्रवीण नजर आते हैं। आई मीन प्रवीण ने भी अच्छा इंप्रेसिव प्रदर्शन किया था पौंडीचेरी में। He was also very good. Oh, he's blinded. He's been blinded. The right corner comes across easily and grabs to not. Chola Veeran. Oh, Rohit Singh. That was very easy. See, this is the problem with Tausif Arshid. Every time you try and believe that he becomes the lead raider and he commits such error. So that's the reason I think any coach who's there does not have that confidence. See, he was the only raider who was present on the court. And what he should have done, he should have taken that responsibility, gone in for the bonus first. I haven't seen Tausif Ahmed, being very confident in taking a bonus point. Just take the bonus and come back instead of getting blinded like that. So as a coach, how do you get that confidence on Tausif Ahmed if he does that?
या बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। और खासकर जब आपने पिछला ही सुपर टैकल किया हो, सुपर टैकल में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला था वहां पर, बट उसके पश्चात वहां पर ज्यादा अंदर की तरफ, और अंदर नहीं वहां पर मैटर करता है, पूरी ब्लाइंड हो गए थे, बिल्कुल मैट के बीचों बीच वहां पर जाकर खड़े हो गए थे। दोनों ही तरफ की कॉर्नर को मौका मिला, उन्होंने चंगुल को बनाया और फंसाया, बट इस खिलाड़ी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है अय्यप्पन। हालांकि अय्यप्पन को अभी भी अपना पहला पॉइंट मिलना शेष बचा है। 3 का हाउस है, सुपर टैकल का मौका होगा। एक तरफ राजेंद्र भाकर है, दूसरी तरफ प्रेम बादू है, दो बहुत अच्छे डिफेंडर्स हैं। लीजिए, प्रेम बादू को शिकार बनाया है। कांग्रेचुलेशंस अय्यप्पन, आपका ये पहला पॉइंट इस मुकाबले का। Oh yeah, and also I think he's got 2 points. Let us say, I think it is, Chola Veeran, yeah, jersey that number is 2 7 and points. 77. Prem Bhadu Wow. and Dev Gurjar, both of them. That was a speedy running hand touch. That was taking off from nowhere there. Substitution, Couple of footwork and then Aravalli off he goes. Ayappan Veerapandiyan, 70, wonderful 17, work. 2 out. And that is place of Rajendra Bhakar. First go for the bonus, just one. It's yours. And 1 plus just 2, 3 dashes them points. off. Chola Veeran. And not Aravalli even a Arrows, bonus all from out. just one. First all out for Chola Veeran and Aravalli Arrows. जी हाँ, कम से कम यहाँ बोनस का प्रयास करना चाहिए था जसवंत को, बट एंगल को पूरी तरह से कट कर कर रोहित वहां पर गए, अच्छा ब्लॉक किया पहले, उसके बाद पूरी तरह से डैश वहां पर कर दिया, तो ऑल आउट हो जाएंगे अरावली एरोज। और अरावली एरोज की हमेशा से थोड़ी सी परेशानी रही है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर शुमार है, पर जब जब आप पूरा कंबाइंड टीम एफर्ट की बात करते हैं तब तब थोड़ा सा पीछे की तरफ झलकती है ये टीम। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रेम भादु की ये होगी बतौर कप्तान कि अपनी पूरी टीम को एकत्रित करके चले। सरप्राइज किया इस बार, लग रहा था रंजीत आएंगे लेफ्ट रेडर, बट राइट रेडर अय्यप्पन आए हैं यहाँ पर रेड लगाने के लिए। That is very well executed, isn't it, from Ayappan Veerapandiyan. He was there, standing there, Ranjit on that left flank, but then the right side was completely blinded by Aravalli Arrows. But that surprise is not converted into a nice gift. Just remains as a small surprise. Should have been converted into a nice gift, as he will be asking to come back. He will be asking to start that raid again. Right, as Navpreet Singh was just stopped in his ranks, as they will take an official timeout as well. And more importantly, see what is the problem with Aravalli Arrows is we've always seen that there are very late bloomers in any series, whether it's the winter edition or the summer edition. They bloom very late. Sometimes I really wonder, they practice together, they stay together, and that does not get converted on the mat. So that means you still are not gelling together, and I don't find that in any other team, especially Aravalli Arrows. Even when Kapil Gurjar and everybody were there, the team got never gelled along together. I mean, there was no coordination. They didn't understand who has to do what. And then Rajendra Bhakar and Navpreet Singh are big names. They are huge names, and of course Asif Ahmed. And everybody have performed well individually. But when it comes to team gelling, I'm not saying they don't gel at all. They do gel, but the time when they they take the time to gel along, the series is half gone, and they don't have that time to come back to play the knockouts or playoffs. That's been a problem with Aravalli Arrows, no matter which that setup is. ये बड़ी जरूरी बात है यहाँ पर कि आप कैसे वहां पर एकत्रित होते हैं, कैसे आप अपने जीत का फॉर्मूला एक साथ बनाते हैं, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा एक टीम गेम खेलने की आवश्यकता होगी। तो सभी यहाँ पर चाहेंगे कि इस बार अरावली एरोज को आगे से आगे तक पहुंचाया जाए, और राजेश गुजर साहब ने पहले मैच में कहा भी था कि इस बार ट्रॉफी हम पूरी तरह से उठाने का प्रयास करेंगे, पर कैसे उठाएंगे, बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है। और हैशटैग उनका आगे का रास्ता क्या होने वाला है कि उन्हें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा हर एक प्लेयर को एज ए टीम परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाना जाएगा। तारीफ करना होगा यहाँ पर हमारे डायरेक्टर देवा की कि सही समय पर उन्होंने हमें याद दिलाया हैशटैग आगे का रास्ता क्या हो सकता है अरावली एरोज के लिए। Yeah, I hope Deva was listening to the commentary and then cut to that shot. I hope he did that. Deva, very good friend of ours. Again. Okay, Deva, we got you. We got you. Yes, I know it. I know what all you do in PCR when there's a cricket match on. Let's get back to what we were actually trying to say. Okay, now tell me what is the highest level that Aravalli Arrows have reached? Whether it's the winter edition, summer edition. Yeah. So, see, that is the problem. That is you never played a final. I think हम्पी हीरोज के विरुद्ध उन्होंने रांची में क्या फाइनल खेला था? No, I don't think so. See. राम कुमार उस टाइम शायद टीम में हुआ करते थे रांची में, I think. Yeah, I think, yeah, only once in the monsoon edition they were the runners up, and even there they had to come back from behind.
They had to fight away all the matches, and they had to win all that matches and then come in to the finals. And see, that is the problem I'm saying. Even with and Rajendra Bakar has been a very strong man in the Aravalli Arrows lineup every time. And if you just go back and see few of the errors, see, it's 12-4, and the Josh Jazba Junoon with Aravalli Arrows does not come in when it is needed. That is what I was trying to say. And if you go back and look at few of the replays of this match, of how the pointers were being taken from the Chola Veeran's raiders, if you really see what Ayappan Veerapandiyan did, and also Ranjit, when they were raiding in, there was no coordination. It's that big lack of coordination is what I'm trying to highlight here. If we can go back to that replay on our EVS, you will know how the Chola Veerans have not done too much of a damage. It's just that the Aravalli Arrows defense is not gelled along together at all. Prem Badu is very good. As a captain, he's very nice. Generally, any raids that is the Chola Veerans have been done, we can pick up any raid on any raid points. If we can see that, will be suggesting us the defense is completely shattered. Not because the raiders are doing very well. It's just because they don't, gel along too much. Is the Aravalli Arrows. Again, probably, I might be wrong here, Arshit, but I think they have a little bit of an experience that they'll have to let go. Like say, Rajendra Bakar or Navpreet Singh, they keep playing at higher levels. And look at that! Surprise tackle! I think 1 or 2 points. Lovepreet Singh is saying 2 points. Surprise tackle coming in from Gautam Murugan from the in position. He was in the right in position. Let us say 2 points. गौतम की तरफ से इस बार वहां पर थोड़ा सा हेस्टी टैकल आया, चाहते थे शायद एक और सपोर्ट वहां से मिले, क्या प्रवीण का सपोर्ट वहां पर आया था, क्या एक पॉइंट, क्या दूसरा पॉइंट किसे टच किया गया था वहां पर? I think to find that out, they're going in for the review. And who's asked for it? I think it's Aravalli Arrows. Yeah, they're saying 3 points. No, 3 points. Guys, if you're not very sure, he's looking completely bamboozled. Prem Badu does not know who's there. TV umpire, Aravalli Arrows challenges 3 points. Our decision 2 points. Please review. Guys, it is just one unsuccessful review per match, and Prem Badu did not know who was out, so he was looking very low on confidence. Right, there you go. As the right cover, Gautam goes in, single-handed attempt on Lovepreet, and a tall raider, Lovepreet, just falls from the back line. So Gautam, yes, definitely a contender to go out, and he also went out, and right, that has not crossed the midline yet. And who comes in? Very tricky. दिनेश चंद को टच किया, और उससे पहले क्या जब राइट इनके खिलाड़ी को उन्होंने हैंड टच करने की कोशिश की, वहां कोई टच था, बट थोड़ा सा टफ कार्य होने वाला है इन रिप्लेस को देखते हुए, थोड़ा सा टफ कार्य होने वाला है। और नवीन, आपको अंडरटेकर की एंट्री याद है जब वहां पर पूरा स्टेडियम ब्लैक हो जाया करता था और अचानक से वो लाइट चलती थी? बिल्कुल वैसा ही माहौल यहाँ पर मैसूर में बन जाता है जब वहां पर रिव्यू होता है, ब्लैक लाइट